Israeli invasion of Gaza has killed over 25,700 Palestinians and wounded over 63,000 since October 7th. The Gaza Health Ministry said Israeli forces have killed 210 Palestinians in the past 24 hours alone. The Palestine Red Crescent Society has revealed that Israeli soldiers are surrounding its teams at the organization's headquarters and El Amal Hospital in Khan Yunis, enforcing movement restrictions. Meanwhile, the World Health Organization stated that 7 out of 24 hospitals in northern Gaza are partially functioning, facing shortages of personnel, supplies, and essential resources. In Khan Yunis, a building complex housing displaced people catches fire amid escalating fighting, leaving tens of thousands trapped without safe access for 2 days, according to UN Agency Director Thomas White. Also, in the Gaza Strip, over 625,000 students are deprived of education due to the Israeli occupation, with 4,551 students killed and 8,193 wounded. According to Al Jazeera, the Israeli bombardment has impacted 90% of government schools, closing all UNRWA schools and affecting 300,000 children. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi accuses Israel of obstructing aid deliveries from the Rafah border crossing, alleging pressure tactics on Gaza. Aid deliveries have decreased from 600 trucks to 200 per day, affecting the people's livelihoods. Sisi blames procedures on the Israeli side for the delays in aid delivery. The Sindh High Court has directed the federal government and the Pakistan Telecommunications Authority to ensure uninterrupted internet access until February 8th, coinciding with the general elections. The order came in response to a petition by lawyer and independent candidate Gibran Nasir against recent unconstitutional internet outages during PTI's virtual events. Mr. Nasir argued that shutting down mobile internet and broadband services should be deemed illegal, and the court ordered the restoration of social media access until the elections. The respondents have been given until January 29th to submit replies, with a focus on preventing disruptions unless specific legal provisions are invoked. Following the hearing, Mr. Nasir said internet and social media were efficient and cost-effective platforms to reach out to voters. आज हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जेंट पिटिशन फाइल की। गुज़िश्ता 35 दिनों से एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्चुअल जलसा होता है, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है, सोशल मीडिया की रसाई जो है नामुमकिन हो जाती है। ना सिर्फ इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, जो कि प्री पोल रिगिंग है, मगर मुझ जैसे आज़ाद उम्मीदवार इनके लिए भी राह जो है मुश्किल की जा रही है, चूँकि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है आज की डिजिटल एज के अंदर वोटर्स तक रसाई हासिल करने का। और इससे ज़्यादा ज़रूरी कि पूरी कौम को भुगतनी पड़ रही है सज़ा। ना सिर्फ ये अरबों रुपए का डेली का नुकसान होता है अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश हो, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम तर चीज़ें शवायद हमने आला अदलिया के सामने रखी और हम शुक्रगुजार हैं मौजूद सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने तमाम चीज़ मद्देनज़र रखते हुए अहकाम जारी किए हैं PTA को, वजारत दाखिला को और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि जब तक 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो तब तक इंश्योर किया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक स्मूथ अनइंटरप्टेड एक्सेस ऑफ इंटरनेट दी जाए, ना सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को बल्कि पूरे मुल्क को, ताकि खास तौर पे इलेक्शन के दिन अगर कोई रिगिंग का वाकया हो रहा है उसको रिपोर्ट करने के अंदर कोई बंदिश ना हो, और अगर कोई इस तरह के मेलाफाइड मलेशियस नेफेरियस एजेंडा से इस वक्त केयर टेकर सेटअप के उनको नाकाम बनाया जा सके। हम मशकूर हैं सिंध हाई कोर्ट का और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे पिटिशन के ऊपर ये ऑर्डर सार्फ फरमाए हैं। पीर को 29 जनवरी को इसकी अगली पेशी होगी और मैं तमाम पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा इस ऑर्डर के ऊपर जो कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया गया है। In more election-related news, PPP Senator Reza Rabbani expressed concerns about the presence of security forces at polling stations, stating that it could impact the fairness of elections. Mr. Rabbani emphasized that while security deployment is necessary for maintaining peace, it is crucial that security forces operate under the control of returning officers and district returning officers. He urged the Election Commission of Pakistan to strictly adhere to these principles and the law to prevent controversial elections, citing past instances where these elements were ignored. Rabbani's statement followed the caretaker federal cabinet's approval of troop deployment at polling stations and sensitive constituencies for the upcoming February 8th general elections. The move was prompted by a shortage of security personnel, with the ECP requesting army deployment due to a significant shortfall across various regions.